So welcome again my audience, myself Gaurav Sharma, MBBS student from GR Medical College Gwalior, and today I am going to complete my ongoing lecture about the blood supply of the gut. And in my previous lecture I have discussed about the celiac trunk, and today we will going to cover the superior and inferior mesenteric artery along with an interesting artery of trunk. So please watch this whole videos, and I am sure that your concept will be built more stronger after listening to this lecture. So let us start with the blood supply of midgut. Because celiac trunk supplies the foregut, and the place in the duodenum, or more specifically the place in the second part or the descending part of duodenum after the opening of bile duct, that is the major duodenal papilla, starts our midgut, and midgut constitutes about the descending half of the duodenum, the third part and the fourth part of the duodenum, the jejunum, the ileum, and the ascending colon, and the first 2/3 of the transverse colon, along with the mesocolon supplying it. Okay, so the superior mesenteric artery supply all these structures basically, and let us discuss about the superior mesenteric artery, and starting from its origin, its course and its termination. Origin, तो देखिए origin तो आप सभी को पता ही है, मेडिकल स्टूडेंट है, बुक्स तो पढ़ते होंगे. कुछ खास बात है इसके origin के बारे में मैं आपको बताता हूँ, वो क्लिनिकली आप कोरिलेट कर पाएंगे. ठीक है, सबसे पहले L1 लेवल पर ये लाई करती है. ठीक है, वो तो देखिए थ्योरेटिकल है. ठीक है, अब इसको क्लिनिकली कैसे सोचेंगे. दिस लाइज बिहाइंड द बॉडी ऑफ पैंक्रियास, लाइज बिहाइंड द बॉडी ऑफ पैंक्रियास, बॉडी ऑफ पैंक्रियास. ठीक है, एट द लेवल ऑफ L1. दूसरी खास बात इसके ओरिजिन के बारे में है, इट लाइज जस्ट अबव the left renal vein, lie just above the left renal vein, the left renal vein. अब देखिए ये लेफ्ट रेनल वेन का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आपसे समझाता हूँ क्या होना है. ठीक है, इसको आप मानिए लेफ्ट रेनल वेन. ठीक है, ये लेफ्ट रेनल वेन है. ठीक है, यह हमारी एब्डोमिनल आयोटा होगी, है ना. एब्डोमिनल आयोटा में बना देता हूं, इस टाइप से होगी ना. तो जो हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होगी वो इसके जस्ट ऊपर से आएगी, ऐसे इसके जस्ट एंटीरियरली लाई करेगी. तो यानी जो लेफ्ट रीनल वेन है उसके एंटीरियर रिलेशन में कौन है, हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और इसके पोस्टीरियर रिलेशन में हमारी एब्डोमिनल आयोटा. सो दैट आई वांट टू से दैट द लेफ्ट रीनल वेन is enclosed between superior mesenteric artery from the anterior part and to the abdominal aorta posteriorly. This is a site of compression of the renal vein. And why it is important? Because the renal vein gets its supply from the gonadal veins also. That is the gonadal veins, that is in male testicular vein and in female ovarian vein. It supplies its blood to the renal vein. And in case it is compressed by the superior mesenteric artery and abdominal aorta, it leads to the non-drainage of the blood from the gonads. And this may lead to pain in the gonadal area and pain in gonads. And especially in males, it leads to varicose veins. This is the concept, and this is also known as the nutcracker syndrome. However, the nutcracker syndrome also involves another clinical correlation with superior mesenteric artery that we will discuss shortly here in this lecture only. Okay, so one syndrome or one important clinical mark in the nutcracker syndrome is that the left renal vein gets entrapped as a nut between superior mesenteric artery and abdominal aorta, and it directly affects the gonads. Okay, so this is the origin. Now let us briefly talk about its cause. See, all the
the structures which I have discussed about the midgut belongs to the right side of our abdomen. You can see jejunum, ileum, and then ascending colon, first to third part of the transverse mesocolon. This basically lies on the right side. So to supply this structure, the superior mesenteric artery has to move in the right direction. Okay, so let us discuss about its course. Origin is over. Let us discuss about its course. Now, as it passes, see, all this blood supply is coming from the posterior part. That is, abdominal aorta lies posterior to all the viscera and to the peritoneum. Okay, so it has to come forward and it has to pierce the peritoneum to supply the viscera that it's supplying. Okay, so we have this important relation also that we will discuss shortly. Now, first of all, its course is come as it is a ventral branch of abdominal aorta, so it comes forward to supply the midgut and it lies. Okay, let me show the relations also. So course and relation. Now, as I said that it has to pierce the peritoneum. Okay, so basically the peritoneum here is our mesentery. Okay, and the point where the mesentery starts is known as the root of mesentery. So we have divided its relation in two types. One above the root of mesentery, that is before, not superior, above. The above relation of the root of mesentery is the relation which are before it gets into the mesentery. Okay, so its relation first, that is above the mesentery, and second relation is the at the root of mesentery. At the root of mesentery. Now, above the mesentery means before it enters into the mesentery, what are its relation? So its relation can be anterior to some things, and it may be posterior to something. Now, the anterior relation of the superior mesenteric artery is formed by the head of the pancreas. This fact is supported by another fact that I have discussed in my origin, that it lies behind the head of the pancreas. Okay, so its anterior relation is formed by the head of the pancreas, and posterior relation, third part of duodenum. Importantly, third part of duodenum. And what posterior relation? Left renal vein, as I have shown in my diagram, and abdominal aorta. Okay, at the root of mesentery, it is basically has a relation with the superior mesenteric plexus of nerves. This you have to remember. Okay, superior mesenteric plexus of nerve is the relation at the root of mesentery. Okay, so these are the relations. Now I talk about the third part of duodenum. Why it is important? It is very much important, my dear friends. Let me show it why it is important. Now let us see. Suppose this is the third part of the duodenum. And the superior mesenteric artery is going on the right side to supply the midgut. Okay. So, and behind the duodenum, behind the third part of duodenum, there is abdominal aorta. So this also makes a site of nutcracker syndrome. How we can see that sometimes eventually the third part of duodenum may be compressed by the superior mesenteric artery and abdominal aorta, leading to certain gastrointestinal problems. And this is also a clinical manifestation in the nutcracker syndrome. So superior mesenteric artery has its two clinical correlation,
which are known as the nutcracker syndrome. One at the left renal vein compression and second, third part of duodenum when compressed leads to certain GIT problems. This is also manifestation of nutcracker syndrome. Okay, we have earlier studied the nerve entrapment, and these are somehow we can call it as a visceral entrapment or vascular entrapment. Okay, there is not written anywhere like this, but this can be said. Okay, I want to try to make more things clear. Okay, so these are the origin codes. Now let us talk about the termination. Termination is very easy, friends. Termination, that before we will discuss about its termination, we need to discuss about its branches. Branches are very important. If you will watch my select trunk video, I have discussed about the anterior and posterior superior pancreatico-duodenal artery, and I have mentioned in my previous lecture that if there is anterior and posterior superior pancreatico-duodenal artery, then there must be an anterior and posterior inferior pancreatico-duodenal artery, which would anastomoses with the branches of the superior pancreatico-duodenal artery. So in that lecture I have mentioned that these are the branches of superior mesenteric artery. Now let us see how. It is not vein. If this is our superior mesenteric artery, then this is our inferior pancreatico-duodenal artery, one going posteriorly, one going anteriorly, and these anastomose with the anterior and posterior branches of superior pancreatico-duodenal artery at the place known as the uncus I think, जो the uncus of pancreas. uncus बिल्कुल uncus ही था, देख लेना एक बार uncus, मेरे को ब्रेन में भी याद आ रहा है uncus ही था शायद. ठीक है, तो ये वहां पर अनास्टोमोस कर जाती हैं. दूसरी ब्रांच इसकी आती है मिडिल कोलिक आर्टरी. उसके बाद ब्रांच आती है राइट कोलिक आर्टरी. ये सब राइट की साइड, राइट कोलिक आर्टरी. ठीक है, और इसकी जो टर्मिनल ब्रांच होती है वो होती है इलियोकोलिक आर्टरी. इसके टर्मिनेशन की एक खास बात यह है कि इट टर्मिनेट्स बाय anastomosing with a branch of iliacoelic artery. That is, we can say that the termination of the superior mesenteric artery is by anastomosing with a branch of its own branch. Suppose this is iliacoelic artery and this is its one branch. Okay, and the superior mesenteric artery will ultimately anastomose with this branch and will terminate. So this is an important thing. So this is the branches termination, and clinical I have said already, nutcracker syndrome. Which thing it supplies I have already mentioned, midgut. Now briefly let us talk about the inferior mesenteric artery. So the origin of inferior mesenteric artery, focus what I say, do not look at the board much. I use board only to demonstrate certain things, otherwise focus on what I am saying. Okay, the inferior mesenteric artery originates just 3 to 4 centimeter above the bifurcation of abdominal aorta. This is a very important thing, that it originates from the level of L3, and the L3 vertebra lies just 3 to 4 centimeter above the bifurcation of abdominal aorta. Okay, so this is its origin, its course. Now since it supplies the hindgut, that is the remaining 1/3 of the transverse colon and the descending colon and the rectum. Okay, so it lies towards the right side, and eventually there is a connection between the superior mesenteric and inferior mesenteric artery by its branches, which are important of the clinical manifestation, and we will discuss it shortly. Really good concept, must watch this video full. Okay, so as this is abdominal aorta, I am just making a rough diagram. Here is our inferior mesenteric artery. Now since this is not working properly, not dark enough, I am using blue.
So this is our inferior mesenteric artery. It gives basically three branches. Main branches are three. We have seen the right colic of the superior mesenteric. So the first branch will be left colic artery. The second branch will be sigmoidal artery, and the third branch will be colic artery. Okay, or rectal artery, we can say rectal artery. Okay, so rectal artery, sigmoid artery, and what I said, this branch, what this branch name is, sigmoid, rectal and left colic. Okay, now here is an important thing. Okay, these three branches anastomose with each other. Okay, and the sigmoid artery gives two branches. One is ascending, one is descending. Okay, one is ascending, one is descending. This is very important to know, ascending and descending branch. Okay, origin, course, termination. Now how does it terminate? It terminates first at the rectal artery. Second, it terminates through the ascending branch of sigmoid artery. Okay, its relation are not at all very important, trust me. Okay, it supplies basically hindgut, and its clinical correlation is very important, because what happens is that whenever there is compression in the region supplied by the inferior mesenteric artery, the blood supplied to the hindgut is hampered, and we do not want the cells to die and necrosis to occur. Okay, so what we need to do is we need to have an alternative blood supply to the hindgut in case the inferior mesenteric artery is blocked. Now how does this can happen? This can happen by an important, very important artery which is known as the marginal artery of Drummond. Marginal artery of Drummond. ड्रमॉन्ड कह लो, ड्रमंड कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। अब मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रमंड क्या करेगी, ये कैसे फॉर्म होती है और ये कैसे हेल्प करती है हाइंडगट तक ब्लड पहुंचाने में इन केस द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी गेट्स ब्लॉक्ड। इसे हम देख लेते हैं, तो फटाफट से हम देखते हैं इसको। मैं बहुत अच्छे एक डायग्राम से समझाता हूं आपको, मजा आ जाएगा आपको। ओके, चलिए कुछ भी ऐसे मान लो, ठीक है। अब देखिए, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में एक बात मैं और बताना भूल गया कि जैसे मैंने राइट साइड की ब्रांचेस डिस्क्राइब करी थी, जैसे कि कौन कौन सी ब्रांचेस थी बताइए। अरे मैं बता देता हूँ, पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल एंड द मिडिल कोलिक, राइट कोलिक एंड इलियो कोलिक। तो वैसे राइट साइड में जिजेनल और इलियल ब्रांचेस होती हैं जो कि बेसिकली आर्केड्स के फॉर्म में होती हैं। आर्केड्स का यहाँ पर ये मतलब है कि अगर ये हमारी आर्टरी है सुपीरियर मेसेंट्रिक, तो ये कुछ ऐसे छल्ले टाइप बनाएगी, ये बनाएगी ऐसे, और फिर ये वासा रेक्टा, वासा मतलब वेस्कुलर, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल, रेक्टा मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट आर्टरीज, स्ट्रेट आर्टरीज ये देंगी। तो ये होता है हमारा आर्टीरियल आर्केड और ये वासा रेक्टा होती है, ठीक है। ये जिजेनल और इलियल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने बात करी थी एक मिडिल कोलिक आर्टरी के बारे में, एक हमने बात करी थी राइट कोलिक के बारे में और एक इलियो कोलिक, और वो बेसिकली इनसे कनेक्टेड थी, ठीक है। अब हमारी यहां पर कौन सी आर्टरी थी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेसेंट्रिक की एक ब्रांच थी सिग्मोइड आर्टरी,
सिग्मोइड आर्टरी की एक ब्रांच थी एसेंडिंग ब्रांच ऑफ सिग्मोइड आर्टरी, इसकी एक ब्रांच थी डिसेंडिंग, और ये आपस में किससे कनेक्टेड थी, लेफ्ट कोलिक से और रेक्टल आर्टरी से, ठीक है। यहाँ रेक्टल थी, ये इससे कनेक्टेड है, और बेसिकली हमारी लेफ्ट कोलिक है वो भी इससे कई जगह कनेक्टेड है। आप एक जगह नहीं बता सकते कि केवल इधर ही कनेक्टेड है, देयर आर मल्टीपल कनेक्शन एनास्टोमोसिस विद दिस। तो अब बेसिकली जब भी हमारी इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में ब्लॉक हो गया तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी हाइंडगट को, तो हमें क्या करना है, एक ऐसा कनेक्शन ढूंढना है जो कि ब्लड सप्लाई कर सके किसमें, हाइंडगट में। तो ये कैसे होता है, तो देखिए ये पैनक्रियाटिक और ड्यूडेनल है, कोई खास बात नहीं है। ये जो मिडिल कोलिक आर्टरी है ये इससे भी एनास्टोमोस करके रखती है, ठीक है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। अब देखिए ध्यान से, जो हमारी मिडिल कोलिक आर्टरी है वो किससे कनेक्ट रहती है, एसेंडिंग ब्रांच ऑफ सिग्मोइड आर्टरी से। यहाँ पर कई सारी ब्रांचेस होती हैं, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये किससे कनेक्टेड है, एसेंडिंग ब्रांच ऑफ सिग्मोइड आर्टरी से। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं मार्जिनल आर्टरी ऑफ ट्रमंड। अब देखिए सपोज इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो इन तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो ये सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की मिडिल कोलिक ब्रांच, राइट कोलिक ब्रांच से हमने, देखो राइट कोलिक ब्रांच किसको ब्लड दे देगी, इसको दे देगी, किसको, मिडिल कोलिक को। मिडिल कोलिक अपनी एक ब्रांच किसको दे देगी, एसेंडिंग पार्ट ऑफ सिग्मोइड को, वो किसको दे देगा, लेफ्ट कोलिक को, वो किसको दे देगा, रेक्टल को। हमारी ब्लड सप्लाई टू द हाइंडगट विल बी रिप्लेनिश्ड, और ये इस एनास्टोमोसिस की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, है ना, जब इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन का कंप्रेशन, आर्टरी का कंप्रेशन होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आर्टरी ऑफ ट्रमंड। बताइए कितना सिंपल था। तो इस तरह से ब्लड सप्लाई ऑफ गट इज कंप्लीट। कोई भी फर्दर डाउट हो आपको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर भी चैनल है इंटरनल बायोलॉजी के, कभी देख लिया कर उसको, ठीक है। आज के लिए इतना, आगे मैं एब्डोमेन की भी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, सो प्लीज शो सपोर्ट गाइस। और नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए भी मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, और अच्छी वीडियो लाऊंगा कंटेंट वाइज। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।